Hello students of class 7th and welcoming you all back to your chapter that is your geographical diversity of India. So this will be your episode number 6. Am I right? This will be your episode number 6, guys. I'll just write it down here. Episode number 6. In your last episode, we have seen about your Ravli Hills, Peninsula Plateau. We have also seen about Himalayas, Gangetic Plains. We have also seen about your Thar Desert. And now we'll be going to see about India's amazing coastline. In here we have the Mumbai West Coast, which is the India's financial center. Here you can see, right? This is your coastline of India. So this is your India's amazing coastline. Okay, I have to change the color of the pen. I did it right. So yeah, India's amazing coastline. So India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs, and lush green. So the coastline is having a it is having very great beaches. The rocky cliffs means it has very pointed tipped up uh, mountain ranges and very lush green forest means it has very green forest as well with very much greenery. Some beaches have golden sand while others have black rocks. So some of the beaches here have golden sand, right? And others have black rocks in them. There are diversity in beaches as well, guys. And some islands have coral reefs, while others are covered in thick jungles. So some are having coral reefs, which are the same from the sea, and others do have jungles, and they are covered, wholly covered with thick jungles. Now, India's coasts are full of surprises. With what it is, with what surprises, the India coastline alone is over 7,500 kilometer long. So this much long is your Indian coast line. 7,500 kilometers. Okay. So now let's explore. Look at the map, physical map of India. So okay, I'll just move here. So yeah, name five rivers flowing in Bay of Bengal and compare the coastlines. So students, the five major flowing rivers into Bay of Bengal are what? So five major flowing rivers are Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, and Krishna. And for the Indian eastern coastal plains, they are very wider and flatter. Why so? Because river deposit large amount of slits here. यानी कि बहुत ज़्यादा जो river deposits है वो सारे यहाँ पे आके फैल जाता है बैठ जाता है that's why they are here and these plains are actually very good for agriculture and they also contain very large deltas right आपके सुंदरबन delta भी है यहाँ पे in West Bengal region you have seen many deltas are present here the western coastline plains are very narrower and uneven. Why so? Because there are western ghats. Western ghats are, as we have learned in our last episode, they are very tall and everything, right? So that's why western ghats are located very close to your coast, and these plains receive very much heavy rainfall and have many ports. That is why your western coast plains are very uneven and narrow, and they are also busy as well, right? Western covers your Mumbai region as well. That's why it is very busier as well. All right. Now, these all are the things which we have. And now there's a second question as well. What is it called when river splits into many streams near the coast? जब river जो coast के पास में बहुत सारे उसमें divide हो जाती है streams में split हो जाती है तो क्या कहते हैं? So when rivers split into smaller streams जो कि coast के पास में है, then it is called delta. राइट डेल्टा फॉर्म होते हैं यानी कि जो स्लिट के डिपॉजिट है जो लैंड के डिपॉजिट है थोड़ा बहुत चीज़ें हैं उसके डिपॉजिट है जो कैरी होते हैं रिवर के साथ तो वहाँ पर डिपोजिशन होता है तो उससे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है डेल्टा की फॉर्मेशन जो सुंदरबन है सुंदरबन डेल्टा इज ऑल्सो फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का जो कि आपको गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से बनता है जो डेल्टास होते हैं दे आर वेरी मच फर्टाइल वाई सो बिकॉज वहाँ पे जो रिवर अपने मिनरल्स वो सब चीज़ें डिपॉजिट लेके आती है उन पे ही वो आके रखती है would be working and that is why they are very fertile and they also support farming and fishing activities right so that is why they are very much ideal for this kind of situations moving forward we have the west coast of India so the west coast of India is
the western part here, this portion of India, like India is like this, right? I just won't make India. Okay, I know I'm making wrong, so I won't make it. But I'm just telling you the western part is this portion, right? This is the western portion. So the west coast of India stretches from Gujarat to Kerala. Okay, so Gujarat to Kerala तक ये आपका region है. From the north, Gujarat is there, and in the south, Kerala is there, passing through Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala. Most river here originate from western Ghats. So घाट्स यहाँ पे हैं जो आपके जो थोड़े बहुत tall घाट्स हैं यहाँ से river flow होती है शुरू होती है and they flow swiftly and from estuaries form होके यानी कि जो इसको क्वेश्चन होते हैं कुछ they form down here and यहाँ पे आके deposit होते हैं यहाँ पे आके गिरती हैं they go here. The coastline is shaped with alluvial deposits from short rivers and features ponds, creeks, and estuaries, with the Narmada and Tapti estuaries being the largest. तो बेटा जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हैं क्या है यहाँ पर जो चीज़ें मतलब जो चीज़ें बनती हैं द सेंस ऑफ कि ये सारी जो रिवर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है पहली चीज़ ये सारी ओरिजिनेट हो रही है और वेस्टर्न घाट से धीरे धीरे आती है और एस्चुअरीज बनाती हैं अंदर दैट ये जो कोस्टलाइन है ये एलुवियल डिपॉजिट से बनती है शेप हो जाती है पूरी ठीक है ठीक है आगे जाके यहाँ पे क्या होता है जो कोस्टलाइन है यहाँ पे बहुत सारे कोव्स क्रीक्स और एस्टुरीज बनती है जो कि आपकी नर्मदा एंड तप्ती एस्टुरीज बीइंग द लार्जेस्ट एस्टुरीज बच्चा वो होता है जब फ्रेश वाटर रिवर जो होता है वो आपका मतलब कि कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर जहाँ पे फ्रेश वाटर है रिवर या स्ट्रीम जो भी कोई भी आगे मिक्स होती है सॉल्ट वाटर आपके ओशन के साथ उसको हम कहते हैं एस्चुअरीज ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एस्चुअरीज फीचर होती है इसके साथ कोव्स भी बोल रहे हैं तो बच्चे कोव्स होता है कोई भी स्मॉल एरिया ऑफ द कोस्ट जहाँ पे लैंड कर्व है ग्राउंड है सो दैट यानी कि उसे विंड से प्रोटेक्ट करना है दैट इज योर कोव्स ठीक है बच्चे अब क्रीक्स भी है नाउ व्हाट इज क्रीक्स यहाँ पे देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो ये यहाँ पे है क्रीक्स बच्चे वो होता है जो एक नैरो स्ट्रीम होती है वाटर की वो टिपिकली स्मॉलर होती है रिवर से बट लार्जर देन अ ब्रू ठीक है तो रिवर की जो स्ट्रीम थोड़ी बहुत छोटी होती है उसको हम कहते हैं क्रीक ठीक है सो कोव इज द राउंडर रीजन the coast creeks are smaller narrow this thing and estuaries and the freshwater bodies like make the salt waters. Now this is the aerial view of the part of West Coast. Note how close the hills of Western Ghats are to the Arabian Sea. यहाँ पे Western Ghats है एंड बच्चा यहाँ पे आपकी अरेबियन सी है तो आप देख ही सकते हैं कितनी क्लोज में है दूर भी नहीं है बच्चे आई एम ऑल्सो टेलिंग यू ऑल दिस ठीक है तो वेस्ट कोस्ट has many important ports and cities. These have been the center of economic activities for millennia. तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है इधर सारा कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी पोर्ट्स सिटीज के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है अगेन आई टेल यू तो ये कौन कौन सी सिटीज को करता है इट इज गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका एंड केरला so five states I'm so sorry five states and the east coast बच्चे lie करता है between the eastern Ghats and the Bay of Bengal so east coast lies between your eastern Ghats and the Bay of Bengal stretching from Ganga Delta to Kanyakumari अब गंगा डेल्टा यानी कि यहाँ से लेके एकदम कन्याकुमारी तक जाता है ठीक है तो दिस इज तो दिस थिंग अब इसमें मतलब कि इधर कितने एरिया तक स्पैन करता है सो इट हैज वाइड प्लेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लेन्स हैं और बहुत सारा मेजर रिवर डेल्टास भी हैं यानी कि जो रिवर डेल्टा फॉर्म करते हैं वो भी बहुत सारे हैं जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारे डेल्टास भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जैसे कि चिलिका लेक पुलिकट लेक ये सारी यहाँ पे भी सिचुएशन है ये सारे यहाँ पे भी फॉर्म होते हैं ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ये सारी बॉडीज भी यहाँ पे हमें दिखने को मिलती हैं ठीक है लगून जो कि बॉडी होती है वाटर की जो कि सेपरेट होती है लार्जर बॉडीज से वाटर की बाय नेचुरल बैरियर ऐसी वाटर बॉडी जो बाकी लार्जर वाटर बॉडीज देन कंपेयर टू दैट सेपरेटेड होती है उसको हम कहते हैं लगून तो चिलिका लेक एक्वाटिक लेक लगून है जो कि यहाँ पे पाई जाती है अब मेरे बेटे डेल्टास क्या होते हैं डेल्टास के बारे में आगे भी चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बट देन ऑल्सो डेल्टास क्या होता है सो डेल्टास आर द लैंड forms जो कि आपके कैसे फॉर्म होते हैं they are formed as by the mouth of the river यानी कि when it deposits sediment into larger body of water such as ocean lake or another river तो
जो रिवर जब चलती है उसको स्प्लिट करती है, यानी कि हम उसका जो रिवर चल रही है उसका जो भाग है जब वो डिवाइड होता है लाइक इट स्प्लिट, तो और जो वो जो भी लेके चलते हैं साथ में व्हेन वॉट एवर डिपॉजिट सेडिमेंट्स, व्हेन वो डिपॉजिट करती है उसको वहाँ पे फेंकती है, तो जो लार्जर वाटर बॉडी में जाती है, तो वो जब जाती है तो जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं उसको वहाँ पे रखते हैं। those sediments, those deposits make up a platform which is called as delta, है ना? एंड ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद में जो डेल्टा सेडिमेंट्स है बिल्डअप हो जाते हैं, एक ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड एरिया बना देते हैं। ठीक है, लाइक दिस, क्योंकि रिवर ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो जो लैंड पोर्शन है वो थोड़ा बहुत ऐसे सा बन जाएगा, है ना? जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स, दे आल्सो क्रिएट फर्टाइल लैंड। कौन सी रिवर? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, दे create fertile deltas making the land ideal for farming as well। ठीक है, ये वाला एपिसोड हम इतना ही रखेंगे, मतलब इतना ही ये चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट गो थ्रू ऑल दिस। सो हमने इस चैप्टर इसमें इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट के बारे में वी हैव स्टडीड। जहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट आपका बहुत बिजी है, जहाँ पे आपका सारा काम कुम चलता है, राइट? वहीं जो ईस्ट कोस्ट है वो आपके डेल्टास फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, हमने इससे पिछले पिछले भी कुछ कुछ एपिसोड्स में क्या क्या पढ़ लिया था, बस उसको भी गो थ्रू करके आई जस्ट वाइंड अप। ठीक है, हमने इससे पिछले में प्लेट्यूज, पेनिनसुला प्लेट्यूज एंड अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? जो कि आपका सेंट्रल पोर्शन में एंड सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में होते हैं। देन वी आल्सो हैव स्टडीड अबाउट द थर्ड डिजिट, जो कि आपका ईस्टर्न, सॉरी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाती हैं। एंड बिफोर दैट वी हैव डन नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन आपका नॉर्थर्न साइड ऑफ और व्हाटएवर, नॉर्थर्न तो नहीं कहेंगे, गैंगेटिक प्लेन्स कहेंगे, जहाँ पे आपकी गंगा आके बहती है, राइट? और उससे पहले वी हैव डन द हिमालयाज एंड वी हैव आल्सो डन द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो इन द अपकमिंग lecture of our, after this video, whatever the upcoming lecture will be, we will be covering the Indian islands, right? We'll just cover the Indian islands only because why not? Like they are just only left. Other than that, we'll be covering the Delta in West Bengal and the Sundarbans and also the upcoming district. And then there is hill and northeast, like northeastern hills and everything. And other than that, there is nothing left. Then there is the NCERT questions and everything, which we'll also do those. So till then, bye bye, and we'll meet you soon after some time. All right. So I'll meet you with another video, another episode after some time. So till then, bye bye, and we'll meet you all again in our next episode. Thank you all.